Hello bachcho, let us read the question. The probability of electrons to be found in the conduction band of an intrinsic semiconductor of finite temperature, option A, increases with increasing band gap, option B, decreases with increasing band gap, option C, decreases with increasing temperature, option D is independent of the temperature and band gap. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है working of an intrinsic semiconductor तो intrinsic semiconductors वो है those semiconductors जो chemically pure है और chemically free of any impurities. So chemically free of any impurities. These semiconductors are called as intrinsic semiconductors. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए लेट्स लुक एट अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. सो सबसे पहला ये है कि सिंस देर आर नो इम्प्योरिटीज ओनली thermal energy can cause charge carriers to move from valence band to conduction band. Can cause charge carriers to move from valence to conduction band. तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड पे एनर्जी गैप को क्रॉस करते हुए जाता है तो इट विल लीव बिहाइंड एन इक्विवेलेंट ऑपोजिट चार्ज विच इज़ कॉल्ड एज द होल. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं. अभी अगर बैंड गैप बहुत वाइड है तो इफ़ बैंड गैप एनर्जी इज़ लार्ज then decrease in number of charge carriers in the conduction band. Number of charge carriers in conduction band. तो बैंड गैप एनर्जी ज़्यादा होते ही डेफिनेटली वी कैन नॉट हैव इंक्रीज इन द चार्ज कैरियर्स. और अगर टेम्परेचर फाइनाइट रखते हैं या कांस्टेंट रखते हैं तो फिर तो सिर्फ एक मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. तो we'll go back and tick the correct option to this question. तो हम देखे हैं कि the probability of electrons to be found in the conduction band of the intrinsic semiconductor of finite temperature, it cannot increase with increasing band gap. तो option A तो नहीं है. It cannot decrease with increasing temperature because thermal energy will actually move them, and it cannot be independent of the temperature and band gap. So the correct answer to this question is option B.
The probability decreases with increasing band gap. Hope you have understood it well. Best of luck.